second. Ibrahim. Okay. So last lecture we started with sharing settings, fine. And we have understand how to manually share the record with the help of sharing buttons, right? So this, one second, let me open that diagram. Okay, it's not here. So this was the diagram. And then we were discussing that. So what happens when the OWT of any object is set to be private? So basically, the first thing what happen is like whenever the OWT option of any object is private, then the record, whatever is created by any of the user into any of the object, I mean, the object which has been set to be the private. So that particular record will be visible to him and to his manager. And apart from these two people, no other will actually have the access. This was the first thing. Now, second, one more thing has been happen is like now now you could share a record to a particular user. So कल जब हम लोग ये देख रहे थे तो what we have seen is like कि sharing mechanism की जब हम बात करें, so first of all we should discuss like how many different ways a record could be shared to any of the user. So basically there are three different ways: manual sharing, automatic sharing, and the apex sharing. So these are the three different ways which with a record could be shared to different multiple users. Now see, the manual sharing is done by the sharing button that we have seen yesterday. But with the sharing button, we have seen like how to share the record to single user. So what we are going to start with today is like with the same concept, like with the manual sharing, with the sharing button, how we could share the records to the multiple users. That is what we are going to learn right now. After this, we will start with the automatic sharing. Okay, चलिए देखते हैं, start करते हैं. So see, so whenever we wanted to share the records to multiple users, we need to create what? We need to create public groups. And then we should add multiple users inside that group. Then we will share the record. Then we will share the record to the group, and indirectly it will be shared to all of the members of that group. That means multiple users. That is what we are going to see. So I have few use cases for this. See, let's start with this. So create a public group with the name Hyderabad Sales Group. Okay, so with this name we are going to create a public group, and then we will add customer user and testing user. We will add these two users as the member of this particular group. So first of all, we will create the group, then we will share the record. वो second step में समझते हैं. पहले हम समझते कि how to create the groups, how we can create the public groups. That is what. Let's understand that. So चलिए. So for this, there is navigation. The navigation has already been written over here. You just need to follow the same thing. Okay. So let's go to the setup menu. Then inside the administer, you have manage users, right? Expand the manage users. Here, see, expand the manage users. Here you have a direct option for the public groups. Here, public groups. See, this is the direct options. Okay. So what we need to do is like we need to click on this public groups. So presently you see there is no such group. Why? Because we haven't created any group so far. So, and that is what the use case is. आपको एक public group बनाना है with this name. Let me copy this. What is the name? Hyderabad Sales Group. And we need to add customer and the testing user. These two users we require to add this group. As a member of this group, we must have customer user and the testing users. Okay. So let's understand how to create the group. So first of all, we need to go to this setup, administer, and manage users. Inside the manage user, you have this direct option, public groups. Okay. You're required to click this. After clicking this will be the interface. So here there is a new button. Just click on this new. Give the label. So we need to create a group with this name, Hyderabad Sales Group. Okay. So this was group and the group name. Now let's add the users. So users we could add, we have different provisions that if I wanted to add a user, I could add it from another group also. If for example, if 10 days back
or rather in the past we created one of the group, एक पहले से group बनाया हुआ है, and you wanted कि इस group में उसी group के members हैं, तो you could even take the group members from another group. That is one of the provision. Roles internal external subordinates or users. So I click on this users actually. So we have all these users that we created, right? So as a member of this group, we wanted one of them is customer, the second one is testing, I think. Yeah, we wanted customer user and testing user to be a member of this group. So I will add customer user and testing user and this add button. Okay. And go with this, just don't ignore this and save it. So we created one of the group called as Hyderabad sales group. And who's the member? Two users are member, testing user and customer users. Okay. Now this was number one use case. Number two use case. Let's now create an account record by logging into the development user. And here we will understand like how to share the record to public group. That is what I was saying. कि अभी हमने कल क्या किया है, देखिए कल भी हमने मैनुअल शेयरिंग किया है, ठीक है, आज भी हम वही करने वाले हैं, बट कल क्या किया आपने, यू मैनुअली शेयर्ड सिंगल रिकॉर्ड टू सिंगल यूजर्स, ठीक है, तो आपने एक एक यूजर को शेयर करना सीखा. नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग हाउ टू शेयर द रिकॉर्ड टू मल्टीपल यूजर्स, एक ही बार में एक से ज्यादा यूजर्स को कैसे शेयर करना. So whenever we wanted to share a record to multiple users with the manual sharing, whenever we wanted to share a record to multiple users, we should first of all create what? Public group, and then share the record to public group. तो आपने ग्रुप में जितने भी मेंबर्स ऐड किए हुए वो सारे के सारे है ना, उन सभी को रिकॉर्ड मिल जाता है. So what we have done for this, we created one of the group called as Hyderabad sales group, and then we added two of the users, customer as well as testing. So what I will do right now is like, I will first of all log in into development users account. Into the account object, I'm going to create one of the record. And then I'll be sharing this record to whom? Single user. At this time, I will be sharing this to this particular Hyderabad sales group. Now, if I share the record to this group, Hyderabad sales group, that record is by default going to be visible to these two members. Why? Because इनको share करना, group को share करना, मतलब group members को share करना. If I share something to this group, the record will be visible to this member as well as to this member. अगर और कोई होता तो उसको भी रहता था. That is what we are going to cross verify. ठीक है, चलिए देखते हैं. So let's log in into the development users account. Let's log in development users account, and let's go to the account object and let's create a new record. Okay, so this time I'm creating like it's like development user record number 3, because 2 records I already have created, right? So this time I'm creating record number 3. It's development user record number 3. Just enter few of the details, whatever you wanted to enter, right? Rating is hot, and then ownership is private, active status is yes. I'm saving the record. So with few of the basic details, see, I have created one of the record into the development users login. I created one of the record, development user record number 3, where inside the account object. Now let's share this record. This time we will not share it to individual user, rather we will share it this to Hyderabad sales group. Okay. So what is going to be happen once again? Let me revise. When you share this record, ये जो record अभी आपने create किया है ना, record number 3, ये वाला. When we'll share this record to this group, Hyderabad sales group, this record will going to be visible to whom? Customer user and to the testing user, both of them. अभी हम एक काम करते हैं, चलो पहले यहाँ से log out कर लेते हैं. Let's log out from here and let's see कि customer या फिर इसको किसी को दिख रहा है क्या. Let me go to the customer users login. Go to the account object. Go to all accounts. So you see only record number 2. What this we have shared it yesterday, right? So he's only visible, and this record is only visible to him. Otherwise, record number 3 जो अभी हमने create किया है, that is not visible to him for the customer users. Okay, let's log out from here and then let's log in into the testing users account also, and let's cross verify there also. I'll go to the account object and then I'll click on this all accounts. So no such record is visible to him so far. Testing user को कोई भी record share नहीं किया है. Okay, so this is now confirmed कि जो अभी record बनाया गया है, that is not at all visible to him. अब development users पे login कर लेते हैं एक बार, जो record create किया है उसको share करते हैं. Okay, what we created this record, development user
record number 3. Now let's share it manually. So manually sharing, whenever you wanted to share it manually, this is the button, sharing button. Now click this. Okay. And let's now add. Here, see, yesterday what we have done, we have added and use on the user basis individually, we have shared the record. Now we will select public groups from here. So just now we created this group, Hyderabad sales group. So I'm selecting this group, and what I'm doing right now, I'm actually sharing this record, user record number 3, ye wala, development user record number 3. What I'm doing right now, I'm sharing this record to this particular group, Hyderabad sales group. Okay. With the access, read only. You wanted read only, go with. Otherwise, read write, whatever you want, and save it. So now see, one group has been added. With the manual sharing, we shared this record to whom? To the Hyderabad sales group. Okay. Now we have done with the changes. So let's log out from here. And now let's go and see whether the record has been received by the customer and to the testing. Why? Because these two are the member of that group. So if that record is being shared to group, तो वो इन दोनों को मिलना चाहिए, जो कि पहले नहीं था. So let's now log in into the customer users account and go to this account, and let's click on the all accounts. You see we have development user record number 3 over here. See, this is the record. So this record is now being shared to him. Log out from here and go with the testing user. Log in into the testing users account, and let's cross verify that this thing over here. Isko to kuch bhi shared nahi tha. But now he's having one record, and that is development user record number 3. See. So this is how, let me log out from here. This is how we manually share, we manually, what we have understand till now, how to manually share a record to a single user or to a multiple users via public group. That is what we have seen. Okay? With the access, of course, read only, read write, whatever you wanted. But what we have understood so far, it's manual sharing. Let's move further to the topic automatic sharing. Now for automatic sharing, you must understand how to create sharing rules. Automatic sharing, is being done with the sharing rules. So let's now understand what is automatic sharing, how to write down the sharing rules. Let's understand this. So let me log out from here so that I'll come back to the login of the administrators. This is the administrators login. Let's now understand what does it means by automatic sharing. So manual sharing में कैसा होता है ना कि every time you require to click the that sharing button, but automatic sharing में ऐसा नहीं होता है. Automatic sharing में basically क्या होता है कि it will by default calculate something in behind, and then it will going to, जैसे आप workflows याद करो, workflow में कैसा होता है कि email अपने आप fire होता है, fields अपने आप update होता है ना. In the same way, based on certain conditions, based on certain criteria, the record is automatically going to be shared. That is what we are going to understand. So let's now understand, like this one is the interview question. What are the different types of sharing rules? There are 3 types: owner based, criteria based, and guest user based. These are the 3 different types. We are going to see this, don't worry. We are going to see this. Okay, so I'll directly move towards the use case. Baki theory jo hai theoretical hai, you need to go with this whole theory. Otherwise it's one and same thing जो मैं आपको समझा रहा हूँ वही पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है. But at least go, just एक बार ही सही, but एक बार देख लिया करो. ठीक है, एक बार देख लिया करो. चलिए, so let's solve this use case. Create a sharing rule to share the account record. Okay, we wanted to share the account record to one of the group called as Hyderabad sales group. Now this is the group what just we have, we created this group. Once again, if you wanted to see, go with the same navigation, manage users and then public groups. So we created one of the group called as Hyderabad sales group. And who are the member? By the way, 2 users, testing user and the customer user. These 2 people are the member of this group. Okay. Now what is the use case? We should share the record, account record precisely to this particular group, but with the read-only access. When the record, see, यहाँ से important है, यहाँ से पढ़ो. When the record meets the below condition. If account industry is banking, rating is hot, active status is yes, and the ownership is public. So if all these conditions, if all those 4 conditions met, we would like to share record automatically to the Hyderabad sales group. For example, now this means if any of the user, it could be your development, it could be manager, testing, any of them, even if the system administrator also, whenever a user creates a new record inside the account object, understand this. First of all, understand the use case, then we will solve it.
Whenever this happens, whenever a user create any of the user creates a record inside account object, whenever a user creates a record inside the account object, and if all these four conditions met, I mean, at the time of creation of the record, the industry of the account is banking, the rating of that record is hot, and active status is yes, and the ownership is public. If all these four conditions met, then we should share this record automatically to whom? Automatically, without clicking any button. We should automatically share this record to Hyderabad sales group. That is what we want. That is what we want. So this means we require here to create a automatic sharing mechanism. And how to create the automatic sharing? With the help of sharing rules. Now let's understand how to do that. Okay, how to do that. Okay. So for this, you need to go, you need to follow this navigation. The navigation has been written. Don't worry. Everything has been written. You just need to follow this. So let's go to setup administrator and then your security controls. In the security control, you have sharing settings, sharing settings. Just click on this. So on this interface, the first thing what you see is OWT, and we have been into here. हम इसके पहले आ चुके हैं ना. We know what does it means by OWT and everything. Okay, so if you just scroll it down, if you just scroll it down, then you will see sharing rules. See, on the same page, OWT is there and sharing rule is also there. Now see, in जैसा OWT मैंने आपसे बताया कि OWT is always written on the objects. OWT is a kind of setting which is being, which is individual for every object. In the same way, let's come scroll it down. If now we are talking about sharing rules, because I told you one thing, if you wanted to perform automated sharing is always performed by writing sharing rules. By writing automated sharing is always performed by writing what? Sharing rules. Now see, similar to OWT, your sharing rule is also for every object. See, for the lead, this is if you wanted to do something, and if you wanted to write sharing rules for lead object, this is the place. For account, this is the place. For opportunity, this is the place. For case, this is the place. For campaign, product, everything, for every object, see, sharing rule has been written. Once you scroll it down, these all are the standard objects. Just scroll it down, and at the bottom of this list, it will be your custom objects. So see, we have three custom objects there. Normally what we have used: hiring manager, position, and the candidate. Here we could see the name of only hiring manager. We couldn't see the name of your position and the candidate, right? I wanted to ask this question here. Why you don't see the name of position and the candidate? Why? See, author, यहाँ तक आपका standard object है. यहाँ से आपका custom object शुरू होता है from this particular point. Yeah, from this particular point, the name of custom objects starts over here. ठीक है? Author is a custom object, book is a custom object, hiring manager custom object, loan and my custom object. But see, apart from the hiring manager, we do know we have position and the candidate also. But I could see the name of hiring manager only here. Why? What is the reason? What could be the reason why I don't see the name of position and the candidate? Yes, can anyone tell me this? What could be the reason for that? Yes, guys. No one? No guessings? Why you don't see the name of position and the candidate? So when we were discussing the relationship, if you remember one point, the sharing and the security setting of the child object is independent of the parent. But in case of lookup, this was lookup. Child have a different sharing setting, parent have a different sharing setting. Now let's come to the master detail relationship. Master detail relationship. With the master detail relationship, we have learned that sharing and security setting of child is completely dependent on the sharing and security setting of parent. That means whatever is the sharing setting, whatever is the sharing security setting, security setting of parent,
that setting will going to be applied on child. Child does not have its own independent setting. Rather, in case of master detail relationship, whatever is the sharing setting of parent, that will be the sharing setting of child. अभी भी नहीं समझा तो मैं अब आपको फाइनल बताता हूँ. Hiring manager, position and candidate, these all are in master detail relationship. कैसे? Because I could see the name of hiring manager only. ठीक है? These all are hiring manager with the position with the candidate. Let me show you that. They are all in the master detail relationship. आओ दिखाता हूं मैं आपको. We have position candidate. Let's now see this. See this. You will understand this now. This is what I was saying, this is what I was saying. Hiring manager is the parent of position. Position is the parent of candidate. Between position and candidate, it's a master detail relationship. That means the sharing setting of candidate. The sharing setting of candidate, it depends on position. Right? Candidate doesn't have any other sharing setting. Rather, whatever is the sharing setting of position, that is going to be applied on the candidate because they are into the master detail relationship. Okay. So for candidate is dependent on position. Now let's talk about hiring manager and position. Between these two objects, again, this is hierarchical, master detail relationship. And that means the sharing setting of position depends on hiring manager. So whatever the sharing setting, whatever the sharing setting here you will create for the hiring manager, whatever the sharing setting you will create for hiring manager, that is going to be applied. You created it for hiring manager, that is going to be applied for the position, and from position it is going to be applied on the candidate. And these two objects, they will not have a scope to have a separate sharing settings. Why? Because they are onto master detail relationship. So this is what the point I told you that time. ये जब इसका समय आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है कि the sharing setting and the security setting of child is completely depend on the parent. So whatever is the setting of parent, that is going to be applied on the child in case of master detail. But in case of lookup, this is completely different. This is completely different. So this is what the concept, right? That is why, that is why here you see the name of hiring manager, but you don't see the name of position and the candidate. Okay, अब clear हो गया तो चलो आगे बढ़ते हैं. So let's come to the use case. What is the use case? Sorry. What is the use case? Our use case is like we wanted to automatically share a record to Hyderabad sales group. Whenever a new record created inside the account object, whenever a new record is created inside the account object by any of the user, we have development user, we have manager user, we have testing user, we have customer user, and then we have system administrator. We have 5 different users. Any one of them could create the record inside the account object. What we want, whenever a new record is being created inside the account object, and if it is, if it satisfies these conditions, what are the conditions? If the industry is banking of that record, the rating is hot, the active status is yes, and the ownership is public. So if all these conditions satisfies, this record should be automatically shared to Hyderabad sales group. That is what we want. Okay, so this means I should write a sharing rule on which object? Account object. That is what I'm doing right now. So I'm creating a new rule inside the account sharing rule. So I'm creating a new rule inside the account.
Let me give the disclaimer. Share account records. Share account records to the Hyderabad sales group. That is what the name I'm giving. You could give any name on this. Let me copy this. Share the account record to the Hyderabad sales group based on certain conditions. Based on certain conditions. Now, what are those conditions? We will write it down. Okay, what are those conditions? Let's see. What are those conditions? These are the 4 conditions. So ऐसा blindly share नहीं करना है अपने को कि जब भी account record enter हो तो वो अपने आप share हो जाए. No. If the account record satisfy this 4 condition, then only we would like it to be shared to Hyderabad sales group. Otherwise not. ठीक है, तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टेस्टिंग करेंगे. ठीक है, चलो अब यहाँ पे I wanted everyone of you to identify few things. ये जो चीजें इसको आइडेंटिफाई करो, बिकॉज ये अभी आपको इसके बाद एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ. ठीक है, सो बहुत ध्यान से समझो, बेटर लिख ही लो, बेटर तो लिख ही लो. whenever we design the sharing rules, whenever we automatically share a record to someone, ठीक है, we should know 4 things. हमें 4 चीजों का पहले से पता होना चाहिए. First of all, what is the criteria? Rule time. What is the criteria to share the record? So based on the criteria. So what is the criteria? On which criteria you should share the record? That is the first thing. ठीक है, तो अभी जैसे यहाँ पे क्राइटेरिया, क्या क्या क्राइटेरिया है? द फर्स्ट थिंग वी हैव एवरीथिंग कि इंडस्ट्री शुड बी बैंकिंग, रेटिंग शुड बी हॉट, active should be status yes, and ownership is public. तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया बना रहा हूँ. तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड नो, द क्राइटेरिया ऑफ शेयरिंग. सो जैसे कि अकाउंट इंडस्ट्री, let me select the industry. Account industry should equals to what? Banking. This is the first thing, banking. ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है? रेटिंग शुड बी हॉट. चलो, रेटिंग should equals to what? Hot. ठीक है, तीसरा कह रहा है कि एक्टिव स्टेटस इक्वल्स टू यस. तो अकाउंट एक्टिव स्टेटस, should equals to what? Yes. And then ownership should be public. Final criteria. The ownership should equals to what? Public. Ownership should equals to public. तो ये पहली चीज. Whenever we are automatically sharing a record, the first thing what we should know in the beginning itself, what we should know as a prerequisite, what we should know is the criteria. What is the, based on what criteria you are sharing the record? That's the first one. Please write it down. Whenever we are automatically sharing a record to someone, the first thing what we should know is the criteria. This is the criteria. Right? This is the first thing we should know. सबसे पहली चीज जो हमको पता होनी चाहिए वो क्या है? What is the criteria of sharing the rules? This is the first thing. ठीक है, now let's come to the second point. अब दूसरी चीज क्या पता होना चाहिए? तो okay, after this, what this has been done, तो we should share the record to whom? आपको record share किसको करना है? Second thing, to whom we should share the record? Whenever we are sharing the record, तो हम record किसको share करें? अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो कि इंटरव्यू में पूछता है. देखिए, whenever we are sharing the record manually, whenever we are sharing the record with the help of sharing button, जो अभी हमने किया, तो आपने देखा कि with the help of sharing button we could share the record to single user, we were able to share the record to multiple users also. That means to the public group. manual sharing में we were able, जो हमने कल किया, what we have done yesterday, we shared the record to single user. What today we have started, we created a public group, Hyderabad sales group. We added 2 members inside that, testing user and customer user, and then manually we have shared the record to them, right? This means with the manual sharing, बहुत ध्यान से सुनो, लिख लो. With the manual sharing, we could share the record to single user as well as to multiple users. With the manual sharing,
we could share the record to single user as well as multiple users. With the manual sharing, we could share the record to single users as well as multiple users. Okay, done. Now we are on to automatic sharing. अब हम automatic sharing perform करने वाले हैं. अब जो ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पे, इफ यू आर ऑन टू द ऑटोमेटिक शेयरिंग, है ना, आप ऑटोमेटिक शेयरिंग पे हो, तो टू whom यू कुड शेयर द रिकॉर्ड्स. आप रिकॉर्ड किसको किसको शेयर कर सकते हो? सी, शेयर विथ whom? पब्लिक ग्रुप, roles and internal subordinates, roles internal and the external, that means portal subordinate. Do we have any option here called as user का कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा. दिस मीन्स, ध्यान से सुनो मेरी बात, बहुत बहुत ध्यान से. इफ यू आर परफॉर्मिंग ऑटोमेटिक शेयरिंग, with the automatic sharing we could only share the records to public group. There is no such option that with the automatic sharing you could share the record to single user. This is not possible. At least directly it is not possible. Directly it is not possible. How to do this indirectly? I'm going to tell you that. Don't worry. अभी जो concept है उसको ध्यान से सुनो. This is one of the interview question. क्या है मैं बताता हूँ. पहले आप ये ध्यान से समझिए. देखिए, मैनुअल शेयरिंग अलाउज यू. मैनुअल शेयरिंग इज अ काइंड ऑफ फ्लेक्सिबल शेयरिंग, जहां पर आप यूजर, एक सिंगल यूजर को या चाहे तो मल्टीपल यूजर को, दोनों को एक साथ, यानी पब्लिक ग्रुप को एक ही आप शेयर कर सकते हो रिकॉर्ड. बट ऑटोमेटिक शेयरिंग में ऐसा नहीं होता. ऑटोमेटिक शेयरिंग में एक रिस्ट्रिक्शन है, वो ये कि विद द ऑटोमेटिक शेयरिंग आई कुड ओनली शेयर द रिकॉर्ड टू पब्लिक ग्रुप. With the automatic sharing, you could only share the record to public group, and there is no provision to share the record to single user. No, this cannot be done. ऑटोमेटिक शेयरिंग में आप सिंगल यूजर को रिकॉर्ड शेयर नहीं कर सकते. देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है. पब्लिक ग्रुप, रोल्स एंड इंटरनल सबऑर्डिनेट्स एंड द एक्सटर्नल, बट यू डोंट हैव एनी ऑप्शन यूजर, जो इसके पहले देखा था हमने यूजर, यहाँ पे नहीं है. तो दिस इज यू नो वन ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल आस्क यू कि with this automatic sharing, can I share the record? Using the sharing rules, यानी कि automatic sharing. First thing is like, can I share the record to single user? क्या आप single user को बोल record share कर सकते हो? तो आपको ये tricky question है. What you need to say, यहाँ पे no और yes दोनों ही गलत है. अगर if I ask you this question using the sharing rules यानी कि ऑटोमेटिक शेयरिंग, कैन आई शेयर द रिकॉर्ड टू सिंगल यूजर, तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर देना है. यू नीड टू से एक्चुअली डायरेक्टली वी कैन नॉट शेयर, बट देयर इज अ वे इनडायरेक्टली वी कुड डू दैट. दे विल आस्क यू, अच्छा टेल मी नाउ व्हाट इज दैट इनडायरेक्ट वे. डायरेक्टली you cannot share with the automatic sharing, with the sharing rules, whatever. Directly we cannot share the record to single user, not possible. With the automatic sharing, we cannot share the record to single user. Directly it is not possible. Indirectly it is possible. How? So indirectly it is possible in the way आप sharing rules के थ्रू रिकॉर्ड सिर्फ शेयर कर सकते हो पब्लिक ग्रुप को, राइट? तो आप एक ग्रुप क्रिएट करें, ऐसा ग्रुप क्रिएट करें जिसमें एक ही मेंबर, मतलब मान के चलिए कि एक XYZ यूजर है जिसको हमें रिकॉर्ड शेयर करना है, लेकिन शेयरिंग रूल से करना है और एक ही यूजर को करना है. तो आप नहीं कर पाओगे, डायरेक्टली नहीं करोगे. तो आप क्या करोगे, एक पब्लिक ग्रुप क्रिएट करोगे और उसमें वही यूजर ऐड करोगे, XYZ यूजर, और बाद में आप शेयरिंग रूल लिखोगे और अब आप जो आप शेयर करोगे तो उस पब्लिक ग्रुप को कर दोगे. अब उस पब्लिक ग्रुप में कितने लोग हैं, एक ही है. तो इनडायरेक्टली इस तरह से जब भी हम शेयरिंग रूल से रिकॉर्ड शेयर करना चाहते हैं सिंगल यूजर को, तो हम कैसे करते हैं कि वी विल फर्स्ट क्रिएट अ पब्लिक ग्रुप. एक पब्लिक ग्रुप बनाएंगे, उसके अंदर एक ही यूजर रखेंगे, कौन सा, जिसको रिकॉर्ड शेयर करना है, और दूसरा कोई यूजर नहीं रखेंगे. सो दिस इज द वे. तो अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. जब भी ये क्वेश्चन आता है तो इसका यस और नो दोनों ही आंसर गलत है. अगर आप बोलते हो कि यस वो कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली है, और नो बोलते हो तो भी गलत है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत केयरफुली हैंडल करना है. इफ आई आस्क यू दिस इन द इंटरव्यू यूजिंग द शेयरिंग रूल्स और बाय ऑटोमेटिक शेयरिंग, कैन आई शेयर अ रिकॉर्ड टू अ सिंगल यूजर, तो आपको यस और नो में आंसर नहीं देना है. आपको स्टार्ट करना है एक्चुअली डायरेक्टली.
Directly we cannot share this, but there is a way indirectly you could do that. What is that way? First of all, create a public group, because see, with the automatic sharing we can only share the record to public group. So create a public group and just add one member into that. The user which you wanted to share the record, just add him to this group and then share the record to group. Indirectly it will be shared to that user. So this is one of the very tricky interview question on this particular topic. Always remember this. Always remember this. Fine. Let's start. आगे बढ़ते हैं. चलो. So we are working on a use case where we wanted to share the record to Hyderabad sales group. So let me go back and select the public group, of course, from there, public group. Which one? Hyderabad sales group. So I wanted to share this record to the Hyderabad sales group. So the first thing, first I'm back to the topic. I am asking every one of you to write this down. Whenever we are sharing the record automatically, what is the first thing? The first thing is like we should know what is the criteria of sharing. We should know criteria. First thing, whenever we are automatically sharing a record, the first thing we should know is criteria of sharing. Second thing, what we should know is to whom we wanted to share the record. To whom, I mean, if we wanted to share it to public group, to what public group? Role, which role? Roles and internal, external, subordinate, then which, whom of them? To whom we should share the record. That is the second thing we should know. What is the third thing? The third thing is, what is the level of access? What is the level of access? So I wanted to give read only. I could give read only, read write, but here I wanted to give read only access for the account. We don't touch the opportunity and the cases. Just working on that. We are writing sharing rules for the account. We are restricting ourselves for the account only. So these are the three things. These are the three things which is required. First thing, criteria. Second, to whom you wanted to share the record. And third, what is the level of access? What is the level of access? Read only or read write? Right. So these are the three things which is required in the beginning itself. Before you actually share the record automatically to someone, these are the three things. You must know what is the criteria. Then you must know to whom we wanted to share this record. Then after knowing this, we must know what is the level of access we should give to the second person. These are the three things which are prerequisite. Criteria. Then the second thing is like to whom we wanted to share this record. And the third thing is what is the level of access. So if you know all these three things in the beginning itself, अगर आपको ये चीजें पहले शुरुआत से ही पता हो, then only you could perform automatic sharing. अभी आप इस यूज केस पे वापस आओ. देखो मैं सॉल्व करवा के आगे बढ़ सकता हूँ, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है, इंपॉर्टेंट कुछ और भी है. अगर मैं इस क्वेश्चन को इस यूज केस को ध्यान से इवैल्यूएट करूं, तो मेरे पास में वो सारी तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले से अवेलेबल है. फर्स्ट क्या बोला उसने? पहला क्या बोला कि आपको क्राइटेरिया पता होना चाहिए. सी, दिस इज द क्राइटेरिया. I know what is the criteria to share. Account industry, this whole information is my criteria. I know it in the beginning itself. Second, to whom we should share. That is also mentioned over here. We should share this record to Hyderabad sales. And third, what is the level of access? Third thing. So if this whole information is available with you in the beginning itself, at the time of sharing, you as a prerequisite, you have all this information. You know what is the criteria, then you know to whom we wanted to share this record, and then what is the level of access we wanted to give to that person. Read only, read write. Everything has been known, all 3 points known. Then only I could go with writing sharing rules, automatic sharing. Otherwise not. Understood this? Understood? Chalo, aage badhte hain. So now because I know everything in the beginning and I have said the things accordingly, based on the record owner, no. Based on guest, no. Based on criteria, I wanted to share this. What is the criteria? Industry equals to banking, and the rating equals to hot, and active, and means if any one of the condition even don't satisfy, the record will not be shared. And means all of these 4 conditions should be satisfied. This is compulsory to have. This is what and operator. एंड और लिखूंगा तो इनमें से एक भी हाँ तो भी चलता, लेकिन एंड मतलब क्या कि ये भी सेटिस्फाई होने को मांगता है, ये भी, और ये भी, एंड एवरीथिंग ऑफ देम.
Every condition, every single condition of this should be satisfied. This is what the and operator implies, right? So this whole condition. Then we are sharing this to what? Hyderabad sales group with the access read only. And let me now save this. The recalculation of sharing access will continue in the background. You will receive an email notification after completing this. Do you want to continue? Do you want to continue? Yes, I wanted to continue. So when this whole process has been done, I'm going to receive one of the email. Let me show you that also. जब ये कैलकुलेशन हो जाता है तो हमको एक ईमेल भी आ जाता है, यू नो. लेट मी गो विद दैट ईमेल. 201 जो आपकी बैच है वो मैं ओपन करता हूँ एंड वी आर एक्सपेक्टिंग वन ऑफ द ईमेल टू कम ओवर हियर. ओके, सो अब यहाँ पे कैसा दिखता है, जब तक आप देखो, जब तक उसका कैलकुलेशन चालू है, ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से लिख के आता है एंड देन सी प्रोसेसिंग कंप्लीट, प्रोसेसिंग कंप्लीट. दिस अब ये होगा आपको द फॉलोइंग शेयरिंग रूल हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड. तो ये इस तरह से आपको एक एक्नॉलेजमेंट आ जाती है, यू नो, यू विल गेट दिस एक्नॉलेजमेंट. दिस मींस ये प्रोसेसिंग आपकी यहाँ पे प्रोसेसिंग हो चुकी है. तो आपको क्राइटेरिया यहाँ पे सेट है. सी क्राइटेरिया हैज बीन सेट, ये आपका क्राइटेरिया बन के तैयार है. यहाँ पे क्या क्राइटेरिया है? अकाउंट रिकॉर्ड को अकाउंट की इंडस्ट्री बैंकिंग होनी चाहिए एंड सेकंड कंडीशन अकाउंट की रेटिंग इक्वल्स टू हॉट होनी चाहिए एंड थर्ड कंडीशन अकाउंट इक्वल्स टू एक्टिव स्टेटस एंड अकाउंट की ओनरशिप. ये सारी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो ये रिकॉर्ड किसको शेयर हो जाएगा ऑटोमेटिकली? हैदराबाद सेल्स ग्रुप को. कौन सी एक्सेस के साथ? रीड ओनली एक्सेस के साथ. ठीक है, चलो अब हम इसको टेस्ट करते हैं. लेट्स नाउ टेस्ट दिस. सो लेट्स गो टू द अकाउंट, create a new account. I'm making this test sharing rule, RECORD, test sharing rule record number 1. ठीक है, with this name test sharing rule record number 1. I'm creating a record. ठीक है, conditions क्या क्या है उसमें? Industry should be banking, industry equals to banking. A rating should be hot, ownership should be public, and one more thing, active status है ना. Industry banking, rating hot, ओनरशिप पब्लिक, एक्टिव स्टेटस यस. ठीक है, तो एक्टिव स्टेटस को मैं नो करता हूं. अभी एक कंडीशन मैंने फॉल्स की है. देखो, इंडस्ट्री इक्वल्स टू बैंकिंग किया मैंने, रेटिंग इक्वल्स टू हॉट भी किया मैंने, ओनरशिप पब्लिक भी किया मैंने. एक कंडीशन को मैं फॉल्स कर रहा हूँ, एक कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूँ. ठीक है, एक कंडीशन को फॉल्स कर रहा हूँ. आई एम सेविंग दिस रिकॉर्ड. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन, क्या ये रिकॉर्ड शेयर्ड हुआ है? क्या ये रिकॉर्ड शेयर हुआ है? आंसर है नहीं, नहीं हुआ है. कैसे पता चलेगा? आप जाइए शेयरिंग बटन पे और देखिए कि ये रिकॉर्ड किसको किसको शेयर्ड है. देखिए ये रिकॉर्ड किसको शेयर्ड है? किसी को भी शेयर्ड नहीं है भाई. ट्रेनिंग बैच यूजर, ये तो ओनर ही है उसका, ये तो ओनर ही है, इसको तो रहेगा ही रहेगा. क्या ये रिकॉर्ड किसी और को शेयर हुआ है? नहीं हुआ है. अगर किसी को होता तो उसका यहाँ पे नाम लिख के आ गया होता. क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई. मैं फिर से वही रिकॉर्ड ओपन करता हूँ, टेस्ट शेयरिंग रूल रिकॉर्ड नंबर 1. क्या कंडीशंस थी? इंडस्ट्री बैंकिंग होना चाहिए था, ठीक है. रेटिंग हॉट होना चाहिए था, है. ओनरशिप पब्लिक होना चाहिए था, है. एक्टिव स्टेटस यस होना चाहिए था, जो कि नहीं है. तो देखो, नहीं है कि नेगेटिव टेस्टिंग किया मैंने. अब मैं पॉजिटिव टेस्टिंग करता हूँ, इसलिए रिकॉर्ड शेयर नहीं. अब मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग करता हूँ. आई मेक दिस इज यस. अब मैं इसको यस करता हूँ. अब सारी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है. इंडस्ट्री क्या है? बैंकिंग. रेटिंग क्या है? हॉट. ओनरशिप क्या है? पब्लिक. एक्टिव स्टेटस क्या है? यस. अब ये चारों कंडीशन, अब मैं सेव करूंगा इसको. ठीक है, अभी ये रिकॉर्ड, अभी डेटाबेस में ये चेंजेस कमिट नहीं हुए हैं, अभी मैं इसको कमिट करने वाला हूँ. बट व्हेन आई कमिट दिस, व्हेन आई प्रेस दिस सेव बटन, तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होने की वजह से दिस रिकॉर्ड विल बी शेयर टू हैदराबाद सेल्स ग्रुप अपने आप. इसके पहले नहीं था. अब आप देखो, आई एम सेविंग दिस रिकॉर्ड. अब रिकॉर्ड सेव हो गया. अब हम चलते हैं और चेक करते हैं कि किसको शेयर हुआ. ये शेयरिंग पे जाते हैं. देखिए आप, हैदराबाद सेल्स ग्रुप क्यों शेयर्ड हो गया, कैसे शेयर्ड हो गया, ये कैसे शेयर्ड हो गया? ये हुआ शेयरिंग रूल्स की वजह से. इसके पहले आता था या मैनुअल शेयरिंग लिख के. अब किसकी वजह से हुआ है? अकाउंट का शेयरिंग रूल जो लिखा है, यानी कि ऑटोमेटिक शेयरिंग, उसकी वजह से रिकॉर्ड शेयर्ड हो गया है. किसको शेयर हुआ है? हैदराबाद सेल्स ग्रुप को. कौन सा रिकॉर्ड है? टेस्ट शेयरिंग रूल रिकॉर्ड नंबर 1. तो हैदराबाद सेल्स ग्रुप में जाके चेक करेंगे ना अपन. हैदराबाद सेल्स ग्रुप में 2 मेंबर है, टेस्टिंग और कस्टमर.
लॉग इन करेंगे और चेक करेंगे कि क्या ये रिकॉर्ड उनको शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। आओ देखते हैं। चलो तो हम चलते हैं यूजर्स पे, और जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो रिकॉर्ड है टेस्ट शेयरिंग रूल नंबर, ये हैदराबाद सेल्स ग्रुप को शेयर हो गया है विद द ऑटोमेटिक शेयरिंग। तो हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे इसको, और हम जानते हैं कि इस ग्रुप में दो मेंबर है, एक तो कस्टमर है, दूसरा टेस्टिंग। तो एक एक बारी लॉग इन करेंगे, चेक करेंगे। मैंने कस्टमर पे चेक लॉग इन किया, अकाउंट पे गया, ऑल अकाउंट्स पे जाता हूँ, टेस्ट शेयरिंग रूल रिकॉर्ड नंबर 1, देखो ये रिकॉर्ड शेयर हो गया है, टेस्ट शेयरिंग रूल रिकॉर्ड नंबर। तो यहाँ से क्लियर पता चलता है कि कस्टमर यूजर को दिख रहा है, एक और यूजर है वहां पे, एक और यूजर है वहां पे, कौन? टेस्टिंग। चलिए, हैदराबाद सेल्स ग्रुप में दो मेंबर है, कस्टमर और टेस्टिंग। कस्टमर को तो दिख रहा है, टेस्टिंग पे जाके देखते हैं कि टेस्टिंग यूजर को दिख रहा है कि ऑल अकाउंट्स टेस्टिंग, देखो आप ये टेस्ट शेयरिंग रूल रिकॉर्ड नंबर with industries banking, rating as hot, ownership as public, and active status as. So this is what does it means by automatic sharing. इस तरह से ऑटोमेटिक शेयरिंग की जाती है, ठीक है। Now we have a few more things to be discussed and I wanted it to be done right now. अब मैंने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू, if you have manual sharing, if you have automatic sharing, why, what is the reason to go with apex sharing? Why at all we should write down the apex trigger? Why? What could be the reason? See, if I share a record, if I could share a record manually, I could share a record automatically by writing sharing rules, by pressing the sharing buttons. If I already have this provision in the Salesforce that I could share a record either manually, either automatically, what is the reason? Why at all I should go for the apex sharing? What are the scenarios where you should go with the apex sharing? This is the interview question. चलो, तो अभी जो थोड़ी देर पहले इतना लंबा डिस्कशन किया मैंने, वही what are the reasons to go for the apex sharing? चलिए, see, if we wanted to share record manually या फिर automatically, manually मतलब sharing buttons के साथ, automatic sharing मतलब sharing rules के साथ, तो है ना, तो हम apex sharing पे क्यों जाए? If we could share this record, तो क्या रीजन है उसके? देखिए, ऑटोमेटिक शेयरिंग में जैसे कि मैंने अभी कहा कि तीन चीजें पहले से पता होना चाहिए। वी नीड टू सिलेक्ट द क्राइटेरिया इन एडवांस। आप क्राइटेरिया जो है, what is the criteria to share the record, you should know this advance. So if we know the conditions, if we know what is the criteria, we could go with the automatic sharing. लेकिन अगर हमें कंडीशंस पहले से नहीं पता है, if but यहाँ से देखो, but if the conditions are not known in the advance, rather they are obtained in the run time. रन टाइम मतलब डायनामिकली यूजर एंटर करके दे रहा है, रन टाइम में पता चलेगा, पहले से नहीं पता है। आफ्टर रनिंग सम पेजेस, यूजर विल एंटर। मान के चलो कि एक यूजर इंटरफेस आपने बना रखा है, एक ऐसा पेज, एक पेज आपने बनाया हुआ है ना, दिस इज वन ऑफ द यूजर इंटरफेस, ये एक पेज है वेयर यू आर आस्किंग यूजर एंटर द क्राइटेरिया, he will enter the criteria to whom we wanted to share, what should be the level of access, read only or read write. So you're asking the user, you are asking the user to enter these three things. अब यूजर यहाँ क्या एंटर करेगा वो तो हमें बाद में पता चलेगा, आफ्टर दिस स्क्रिप्ट हैज बीन रन, हमको पहले से नहीं पता चलेगा। तो यही था डिस्कशन जो मैं आपको ले रहा था बार बार, कि जब भी हम ऑटोमेटिक शेयरिंग करते हैं तो हमें तीन चीजें पहले से पता होना चाहिए, क्राइटेरिया पहले से पता होना चाहिए, किसको शेयर करना है वो पहले से पता होना चाहिए, कौन यूजर है, कौन पब्लिक ग्रुप है, और क्या लेवल ऑफ एक्सेस देनी है, रीड ओनली या रीड राइट, ये सब हमको पहले से पता होना चाहिए। सो इफ वी नो दिस होल थिंग, और ये तीनों चीजें अगर पहले से पता है, तीन में से एक भी नहीं पता है, तब भी आप ऑटोमेटिक शेयरिंग नहीं कर सकते। आपको क्राइटेरिया पता है, आपको पब्लिक ग्रुप पता है, पर यही नहीं पता कि लेवल ऑफ एक्सेस क्या है, तो आप नहीं कर सकते। आपको लेवल ऑफ एक्सेस पता है, क्राइटेरिया पता है, पर यही नहीं पता किसको शेयर करना, तब भी आप शेयर नहीं कर सकते। ये तीन चीजें हैं और तीनों एंड में है। एंड का मतलब ही क्या होता है? एंड का मतलब ये होता है कि ये और ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड होनी चाहिए, तो ही हम कर सकते हैं। लेकिन अब देखो, अगर हमें क्राइटेरिया रन टाइम में मिलता है डायनामिकली, देन वी शुड गो फॉर द अपेक्स शेयरिंग। तब आप ट्रिगर फायर करके कैप्चर करोगे, वो वैल्यू कैप्चर करोगे। इफ पब्लिक ग्रुप है, किसको शेयर करना है, वी नीड टू सिलेक्ट, इफ यू नो दिस in advance, okay fine, but if this value also supplied dynamically at the runtime,
Then also Apex sharing. If the level of access you know it in advance, okay, that's great. You could go with the automatic sharing. But if you don't know this, even if this entity comes at the runtime, then we should require to go with the Apex sharing. So in short, if the entities come during runtime, dynamically during runtime, then there is only one option, and that is Apex sharing. That is Apex sharing. Okay. So this is also one of the interview question. One last thing before we end up this, because tomorrow I'm going to start with the queues. I wanted to have a discussion, a very small discussion on this public read only, read write, and what is this read write transfer. See, as an OWD option, हमने क्या क्या किया अभी तक? OWD equals to private. ठीक है, बस इतना ही किया. सही बताऊं तो इतना ही किया, क्योंकि when OWD is private, sharing mechanism activated. When OWD is private, sharing mechanism activated. Inside the sharing, we have understood what is it means by manual sharing and automatic sharing, and why to go for Apex sharing. That is also. तो टेक्निकली हमने OWD में अब तक कितना पढ़ा? सिर्फ प्राइवेट. अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट डज इट मींस बाय अदर थिंग्स आल्सो. देखिए, प्राइवेट को हटा के अगर कोई भी चीज पब्लिक है तो वेदर इट्स पब्लिक रीड ओनली, वेदर इट्स पब्लिक रीड राइट, वेदर इट्स पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर, और वेदर इट इज फुल एक्सेस. if the OWD option is public, इसका मतलब ये कि the record is accessible to everybody. The record is accessible to everyone. The record is accessible to everyone. सबसे पहली बात. दूसरा, अब देखो कि क्या है. Accessible है कौन सी मोड में? रीड ओनली मतलब सिर्फ वो रीड कर सकता है. Accessible है रीडिंग और राइटिंग, तो वो रीडिंग भी कर सकता है, राइटिंग भी कर सकता है. रीड राइट ट्रांसफर. ट्रांसफर मतलब क्या होता है? ओनरशिप ट्रांसफर करना, जो अभी आप सीखने वाले हो. ट्रांसफर करने के बाद ही वो पर्सन डिलीट कर सकता है. मैंने आपसे पूछा था कि रीड ओनली या रीड राइट, दोनों में एक ही चीज हो सकती है. वो ये रीडिंग कर सकता है, राइटिंग कर सकता है, लेकिन डिलीट नहीं कर सकता. पर्सन डिलीट कब कर सकता है? व्हेन ही हैव द रिकॉर्ड, उसको ओनरशिप ट्रांसफर की जाए वो. एंड देन फुल एक्सेस मतलब पूरा रीडिंग, राइटिंग, डिलीटिंग, एवरीथिंग. ठीक है ये. एंड देन नो एक्सेस व्यू ओनली, ये दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द प्राइस बुक. ठीक है, ये सेल्स क्लाउड का एक सर को छोड़. तो इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है यहाँ पे. प्राइवेट क्या है और पब्लिक क्या है? प्राइवेट और पब्लिक के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है? पब्लिक में सब चीजें पब्लिकली एक्सेसिबल है, प्राइवेट में ऐसा नहीं है. प्राइवेट में क्या होता है? एक तो जिसने बनाया और उसके मैनेजर, और उसके बाद आपने जिसको भी शेयर किया उसको रिकॉर्ड मिलेगा. तो शेयर किसको किसको कर सकते हैं आप? जिसको चाहे उसको कर सकते हैं. शेयर कैसे किया जाता है? या तो मैनुअली, या तो ऑटोमेटिकली, या फिर अपेक्स शेयरिंग. ये हमने पढ़ा बेसिकली. तो दिस इज व्हाट द OWD ऑप्शन. तो यहाँ पर आपकी दो चीजें कवर होती है, खत्म होती है आज. एक तो OWD खत्म करता हूं मैं, और दूसरा आपको शेयरिंग. और कल से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये जो हमारा ट्रांसफर वाला ऑप्शन है, जिसमें हमको क्यूज भी पढ़ना है कि शेयरिंग और ट्रांसफरिंग रिकॉर्ड के बीच में क्या डिफरेंस होता है. जो मैंने अभी 2 दिन पहले अनाउंस किया था कि एक क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेयरिंग अ रिकॉर्ड एंड ट्रांसफरिंग द ओनरशिप. या फिर जो मैंने कहा था कि अगर हमने रिकॉर्ड शेयर किया, जैसे मैंने आपको रिकॉर्ड शेयर किया, आई शेयर द रिकॉर्ड. ठीक है, आई शेयर द रिकॉर्ड टू जोशना, किरण, प्रज्वल. कैन दीज गाइज कैन डिलीट द रिकॉर्ड? तो आंसर है नहीं. ये सिर्फ उसको रीड कर सकते हैं, या फिर मैंने अगर किसी को रीड राइट परमिशन दी है तो वो रीडिंग भी कर सकता है, राइटिंग भी कर सकता है. लेकिन दोनों सूरतों में ये डिलीट नहीं कर सकता. देन इफ आई वांटेड टू हैव यू दिस राइट, मैं चाहता हूं कि किरण को वो राइट मिल जाए, दैट किरण कुड रीड राइट एंड इवन इफ शी वांट शी कुड डिलीट द रिकॉर्ड. तो वो कैसे देते हैं? तो वहां पे आता है कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफरिंग अ रिकॉर्ड. तो अब हम कल से यहाँ से स्टार्ट करने वाले. उसके लिए मुझे आपको एक टॉपिक पहले लेना है, वो है क्यूज. फिर मैं आपको बताऊंगा कि रिकॉर्ड ट्रांसफर करना मतलब क्या होता है, और क्या डिफरेंस होता है रिकॉर्ड शेयर करना और रिकॉर्ड ट्रांसफर करने का. बहुत बारीक सा डिफरेंस है, एक ही पॉइंट का, लेकिन समझ जाएगा, डोंट वरी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट बाय टुमारो. टुमारो इज थर्सडे. थर्सडे आई विल बी स्टार्टिंग क्यूज. देखते हैं. ठीक है. ठीक है. ओके. So tomorrow I'm going to start with the queues.